यहाँ दिखता है नहीं पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है. This is another new thing. See, the quality of prasad is always quite superior, and people even if you get a small bite also, it's like a mahaprasad to everybody. That's what we all know. It was done with a very great reverence, and especially the materials will be chosen for prasad is sourced from very, very trusted groups and trusted companies, and which had been given by the last few decades. You want to get this particular material, grains, everything is sourced out in a very well-structured manner, and no one has dared to violate that part, and no one has dared to change. Even if they wanted to change it, then no one dared. So imagine you need per month, so per day, you need 15,000 kgs of ghee is needed to make prasad. These guys say, their claim is, why did we change the vendors? Was it is 1,000 rupees plus something, and we have changed it. We have brought it down to, and they said we have to give, the supply had given us around 360 to 400. The making of ghee itself is quite high price. So we understand how could they source such a cheap ghee? And later, after a few months, we were all wondering, maybe we don't know how could they achieve it. So we don't know, they had sourced out from somewhere from Delhi, Ghaziabad, somewhere in UP, Delhi or part of Delhi. Maybe we don't know. Maybe someone is there. Maybe they said we don't know. But they said people were complaining regularly, the smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening, maybe you have to put for us some kind of lab testing. There are many things, such things. I thought no one would be dare to violate, play with this kind of sentiments. I thought of it, but we didn't give I was looking at other things in TTD. But when this particular issue came, when the new EO came, we looked at it. I said, we want to revive the TTD. Whatever had been TTD, a lot of mismanagement had been done, misappropriation of funds had been done. They started a thing called Srivani Trust, and they don't know what these guys had done under the. I think Chairman, TTD chairman was Mr. Subbareddy Garu, and EO was Mr. Dharma Reddy. So we have been consistently raising our concerns regarding the quality of prasad and regarding the functioning of TTD itself, and of course other dharmic issues. But these guys, when we formed the government, and I said we want to revive, we want to go back to, then we sent samples, and we realized that this is animal fat, fish oil, and of course amount of beef fat and pig fat, fish oil, elements of both these things are there, all these three. And we are quite hurt, quite in a state of shock. And people have taken it for granted to play that kind of games. Here it is, when people of no commitment and no value and no respect for the sanctity of a temple, and if they take charge, this is what exactly happens. In the name of politicking, they went for some substandard things, and that's the result of it. And on the top of it, there is a lot of. It's not just about prasad today. Maybe there were a lot of liquors were supplied, non-vegetarian was supplied, and people were having parties there. And someone raises their voice, it will be with their muscle power. They used to keep them down, and all these things came out. I think there's a high time. That's the reason today morning I tweeted. I think there's a high time that everyone should come together. It's not about one prasad today. It's definitely shocking. It's hurt. I think we have to, because when governments and boards are not acting well, there should be some other monitoring mechanism in India, in Bharat. It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. Because
any kind of desecration happens to idols, the sanctity of the temples not been maintained, like TTD Prasad and all. And whatever the Agama Shastra says, the practices, the devotional practices, the method you pray, when they're not being practiced, I think a lot of mere political employments come into the picture. So there should be, I feel, the reason I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was, when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think Sanatana Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. Maybe I'll speak to our cabinet and honorable CM also. I think I think I'll take it forward, this particular concept, and if you look at it, a lot of revolutionary concepts came under the leadership of Sri CBN Garu. जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको, और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है, और इसका जांच बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए, और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है वो हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं, और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं, और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। देखिए, जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन की रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए, और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है।
महापाप है या ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग, और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी